Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Keep the charts clean. We'll start the analysis in 2 minutes. Good morning, Varun. Thank you so much. Okay. So let's start. नहीं नहीं अरुंधति मैम सेम लेवल्स पे रहो. ओके. सो हमारा फ्राइडे के दिन जो लेवल्स अलोकेट हुई थी मिनिमलिटी M2 का 200% उसी पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट ने रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में प्रोसेस किया, राइट. सो विद दिस फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन प्लान्स क्या देखना होगा, राइट. रीमॉडरेट अलोकेशन में अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रीवियस, राइट. सो इज दिस द वन व्हाट विल बी टेकिंग? नहीं, राइट. क्यों? क्योंकि अभी भी ये एक्शन प्लान ऑफ सेटअप जनरेट नहीं हुआ है. सेटअप जनरेट होने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शंस दैट विल बी फॉलोइंग? प्रीवियस सप्लाई को लेंगे, राइट. इन प्रोपोर्शनेट वी विल चेक द मैपिंग कि कहाँ से कहाँ तक का मूवमेंट जनरेट हुआ है, राइट. सो 100% रिजेक्शन लिया. 100% रिजेक्शन लेने के बाद देर वॉज नो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूटी इन द मार्केट, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूटी इन द मार्केट. सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में विल लुक फॉर अ रीडेवलपमेंट चेंजेस. यहाँ पे हमारे पास S2B1 सेटअप जनरेट हुई थी. उसी S2B1 सेटअप के साथ मार्केट ने कंटिन्यूटी मूवमेंट दिखाई, राइट. सो विद दिस व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स जो हमें देख के चलना होगा? First allocation point, right? Break and continue. When there is a break and continue, 200% mark, right? 200% say we have a rejection. So rejection perspective में first come first serve we have to look, because जब तक change of structure नहीं होती है continuity in the market दिखने को नहीं मिलेगी, correct? अभी इस point of action में हमें majorly क्या focus करना होगा? First come first serve में this is the action plan what we have in the demand, right? So this demand will be taken under the consideration of a new candle offer, right? Why are we not taking this candle? Because this candle is taken under consideration of news. So news candle ko hamesha we'll keep it aside, right? So with that proportionate, what do we see? There is a break and continue. When there is a break and continue, we map it double. Double map करने के बाद, what is the structure that we are finding at this point? Agar if we change the color, market took a rejection from 150%. 1, 2, so 150% रिजेक्शन दिखा, राइट. सो जैसे ही रिजेक्शन दिखा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होने के बाद हमारे पास ऑलरेडी अलोकेशन में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, करेक्ट. सो विल टेक दैट डिमांड एज आवर न्यू स्ट्रक्चर in the base to allocate the upcoming demand plan, right? Is this where we'll be keeping the demand, or we'll be allocating it from the top of the supply? Yes, from the top of the supply, right? With this action plan, market gave a break and continue. With the break and continue, market took a rejection from 150, right? जैसे ही 150 से rejection दिखने को मिली हमें, what is the next step that we'll be following? We'll be following a movement action plan which is taken under the consideration of the nearest supply point. The nearest supply point will act as the current retracement candle of this supply, right?
So this will be the plan of action which will be taken under the consideration from the rejection. So this is where the market tend to move because we have a break of structure. So we'll allocate the movement plan into two, right? So we had got a movement into the play of 200% break and continue. जब 200% break and continue होता है, what is the structure that we follow? We follow a structure of surplus. So in this plan, 200% से ही rejection है हमारे पास, correct? So 200% से the starting point of the supply will be our surplus movement, जहाँ से हम reallocate करके चलेंगे movement को, right? So this will be the new surplus allocation point which will act at the current state from the retracement. With this retracement, we have a minimality action plan. With this minimality action plan, what is the structure that we will be following at this current stage? Retracement को identify करना है. Retracement ये था हमारा. So whenever there is a structure shift, what do we see? Supply converted into demand or demand converted into supply. So in this scenario, the supply got converted into demand. So this will be the same movement action plan which you will be noticing in the red movement, right? So जैसे ही minimality develop हुआ, what is the next step? Which minimality is it? We have 150% as M1 also, we have M2 as well. So in the consideration, first action plan will be always taken with M1, right? So with this proportionate, what do we notice? We notice a movement which has taken a break from 150%. Okay. So this is the plan of action, what actually market tend to follow. राइट उसके साथ न्यूयॉर्क सेशन में जाके मार्केट ने न्यूयॉर्क पीएम सेशन में जाके मार्केट में एक कंसोलिडेशन रेंज ऑफ एक्शन क्रिएट किया उस रेंज ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल एंड इजी स्टेप्स व्हाट यू कैन फॉलो इज allocate the structures in perspective of to the previous, right? So this is one. मैं रफ फिगर आउट दिखा रहा हूँ, right? Break and continue, 150% rejection, right? With that, in continuity, this is the new demand what came into the play, which will act as our new allocation point. Why? This point of action doubled the 200% rejection. With the 200% rejection, continuity in the movement, right? When there is a rejection in the play, what is the first action plan? The surplus movement will be taken under the consideration from the nearest point of the demand range to allocate the structure, right? So this is the plan of action which needs to be taken under the consideration of the previous to allocate the structures. With the structure changing each and every time, you have to keep in mind where exactly the movement gets allotted, through which point of action and through which cycle of action, and continue the movement. Right, so demand got completed at this point. इसके साथ liquidity grab generate हुआ था. Liquidity grab generate हुआ है मतलब market will come back to that same point of action. So in this state, what is the first come first serve that you will be looking for? Right, the first come first serve is the supply what needs to be taken under the consideration of the previous will be marked out with the body first, break 1 and 2. Market took a rejection from 200%. जैसे ही 200% से rejection लिया, what is the next step that we'll be following? We'll be following a new supply. So in this catered movement, so this is the new supply what market tend to move in, right? So इसी point of action के साथ market ने rejection लेके continuity में दिखाई. यहाँ पे हम क्या mark करेंगे at the first stage? The demand. Right, so in perspective of demand marking, ये हमारा previous demand है जो कि post the supply conversion will mark. What do we notice?
market created a minimality as well and the movement in the continuity. So with that, हमें एक्शन प्लान को डबल 200% स्ट्रेट ब्रेक एंड कंटिन्यू जब दिखाता है, we take the demand through the previous first come first serve, मतलब second point of action. So this is the second point of action which will take a play. So we'll allocate this movement through the structure, right? So 100% break and continue, 150% rejection, right? 150% से थोड़ा नीचे ही आया, so it's in the same lane of previous demand point of action range. So with that, allocating the structure of same New York zone again, what we'll do, we'll take the previous action to conclude into the current state, right? So what did market tend to do? Market tend to break and continue. We have a 150% rejection again, right? So with that 150% rejection, continuity in the movement, which got stabilized with the first come first serve action plan, which is this. So this demand will take under the movement control of the current structure. So we have a break of structure, so we take it from the wick. What do we notice? We notice a minimality M2 creation. Once the minimality M2 is created, the movement action plan automatically doubles for 200% range, right? So this is minimality M2, which got created into the play. With the creation of this, what is market trying to do at the current stage? A continuity in the movement plan. So with this completion, first come first serve, this is the supply what will be taking under the action. First point, second point, there is a break and continue. So first come second range में जब previous supply call out करेंगे, that will be the new action plan which will be taken under the consideration. 1 and 2. Okay, so till I mark out the levels, we'll just look for a proportionate angle plan and be in the direction of the markets, not against to it. So this is the screening how you have to work on in perspective of being in the right direction of the movement in the continued state. Okay. जो भी डाउट्स है पूछ लो. Good morning, Prakash Raj. Just now we have done the same analysis, ना? उसी का तो analysis किया हमने अभी.
जब तक इधर लिक्विडिटी इंटैक्ट लेवल खत्म नहीं होता है, तब तक you will not look for an execution perspective. Market could give a movement and complete the intact level zone. उसी point of action के साथ market continue करेगा the movement till M1 200%. Good morning, Usman. Good morning, Deep Mean Motivation. Okay. Good morning, Sumit. Good morning, CC. हाँ, देख रहा हूँ सुमित, 2 मिनट दे दो मार्किंग हो जाने दो. एंड एंट्री के लिए गुड मॉर्निंग अनुराग. एंट्री के लिए हमेशा याद रखो प्रकाश, वी हैव 3 setups which is S2B1 3 wing setup and S2B2 setups. So execution will be showcased in projections of that levels only. ठीक है. मैं अनवांटेड निकाल रहा हूँ क्योंकि चार्ट क्लीन दिखे. गुड मॉर्निंग मिस्टर कुमार. फर्स्ट टाइम लाइव है. ओके. ओके. क्या नॉलेज देते हैं आप. माशाल्लाह कमाल करते हैं. बस डिमांड सप्लाई को इजी करके वीडियो बना दे पूरा हिंदी में सर. आप लाइव एक वीक आ जाओ, डिमांड एंड सप्लाई आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके. एंड थैंक यू सो मच. सर समझ नहीं आता है आप कहाँ से ड्रॉ करते हैं. मैं वीडियो देखा था मैथ्स वाला एंड हिंदी में होता वीडियो तो और ज्यादा अच्छा होता. सुमित आप तो लाइव में देख रहे हो यार, आपको क्या डाउट आ रही है, पूछ लो डायरेक्टली. और कब 0.168 का कब 3 या नंबर उस करते हैं वो भी समझ नहीं आता. सुमित हम क्लियर कट बोले थे, सीक्वल ऑफ स्क्वायर रूट वाला जो फॉर्मूला है वो Q1 एंड Q2 में ही चलता है. राइट. यूज TTS 2.0 और मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2.0 as the execution perspectives of the calculation. Okay. 1.618 एंड 2 का फॉर्मूला जो है सिर्फ उसे यूज कीजिए. 0.618 एंड 0.5 एंड 318 का जो फॉर्मूला है उसे सिर्फ आप वीक में Q1 एंड Q2 का एनालिसिस के हिसाब से ही यूज कर सकते हो. ओके. एम आई क्लियर सुमित. सर आई वाज ट्राइंग टू लैंग्वेज प्रॉब्लम सर जी. हाँ ओके. दो तीन बार लाइव में आ जाओ ठीक हो जाएगा. ओके सर.
Sir, I was trying to order the book and contacted the telegram. Okay. Sir, I was trying to order the book and contacted at telegram support, but कोई अभिषेक सर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है. Okay. I have a question with structure shift with recent low at 1 a.m. UTC. मैं चेक करता हूँ कुमार. I have a question with structure shift with recent low at 1 a.m. UTC where 200% got completed. The next green candle is created. So which last demand we are considering for this supply? Good question, Anurag. Right? In this perspective, what do we notice? Right? 1 o'clock यहाँ पे movement action plan 9:30 को complete हुआ था, correct? 1 o'clock ही है ना? ये आज का 1 o'clock का बोल रहे. You're talking about today's movement, Anurag? ये हाँ, ये Q1 and Q2 क्या था? Q1 and Q2 is a financial year. हमारा सिस्टम में 4 फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, क्वार्टर्स, राइट? एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं. उसको हम Q1, Q2, Q3, Q4 बोलते हैं. हर एक क्वार्टर में 3-3 महीना होता है. ठीक है, वो आपको गूगल में मिल जाएगा, देख सकते हो. वर्षा, ये कुमार का देखो यार कुछ. टुडे. अच्छा, एक क्यू था 1 o'clock. ओके. सो जैसे ही मिनिमलिटी कंप्लीट हुआ यहाँ पे, राइट, इन दिस प्रोपोर्शनेट अगर आपको क्या चाहिए था, लास्ट डिमांड कंसिडरेशन क्यों करना है, राइट? क्योंकि हमारा एक्शन प्लान यहाँ पे क्या था, फर्स्ट डिमांड अलोकेशन, राइट? सो हमारा फर्स्ट डिमांड अलोकेट कहाँ पे हुआ था, ये डिमांड अलोकेट हुई थी, करेक्ट अनुराग? इसके साथ M2 फॉर्म हुआ था. M2 जैसे ही फॉर्म हुआ, मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट till the completion of this point. अभी इस point of action में जैसे ही रिजेक्शन लिया, what is the first thing you have to wait for? The moment to create a setup. S2B1 का setup के हिसाब से execution यहाँ पे हुआ. But first come first serve में हम यहाँ पे supply कौन सा लेंगे, ये वाला ना. So this is the first supply what you will take into the play, right? So with this action plan also, what do you notice? A movement structure which got converted with the minimality के साथ 200% यहाँ पे complete हो गया था, correct? So उसके बाद first come first serve होने के बाद what is the next action plan? The second service. Where is the second service? This is the second service. Where will be the execution point from the demand range ना यहाँ पे, इसी demand range के साथ execution, right? So अगर conversion को mark करना है, where is the single candle conversion? Single candle conversion was taken in the perspective of the previous, which will act as your current demand, supply converted into demand. Drop 1, drop 2, market took a rejection from 200%, correct? So that should be the nearest point of action which needs to be taken under the consideration to remap the structure. M2 is called as minimality. M is called as minimality because minimality में 3 variants है. So we call it as M1, M2 and M3. So S2 का full form आके setup 1, setup 2, setup 3.
Definitely, right? Step by step जाएंगे. We will work on it as well. ठीक है? MTSL start कर लो स्मिता मैम, अरुंधति मैम, all the LTD members. Sixth leg surgery. Thank you so much. सर 2025 में आने ही वाले हैं हम. मतलब समझाना है. आपका नाम क्या है? डीप मीनिंग मोटिवेशन. स्ट्रीम विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 15 minutes. जो भी डाउट्स है पूछ लीजिए. किसी को भी एग्जीक्यूशन देखना है, एक इंटैक्ट लेवल से देख सकते हो. सब्सक्राइबर्स 2025, अभी 2021 है ना. ओके, गॉट इट. आपका नाम? डीप मीनिंग मोटिवेशन. नवाब. नाइस नेम नवाब. हमारा सेल तो फ्राइडे से चल रहा है, 57 से. ID trade में first point of action should be taken under the consideration till only the liquidity grab point. उससे ज्यादा मत देखना please. And don't showcase the greed in the direction of the movement, so you guys don't get trapped.
डिमांड मार्क करके चलो, जहां तक एक्शन प्लान होगा वहां तक का मूवमेंट. इन द करेंट स्टेट, फर्स्ट एक्शन प्लान एग्जीक्यूशन जिनका नहीं हुआ है, दैट्स टोटली फाइन, राइट. फर्स्ट स्टेज ब्रेक एंड कंटिन्यू. This is the second point of action, right? In the second point of action, जहाँ पे भी intact level से rejection दिखता है, वहां से trade of execution with the setup will be taken under the consideration. Okay. Good morning ZG, कैसे हो? So far completion of any supply or demand at 150% or 200%, we wait for setup to be formed S2B1 or S2B2. At current stage only S2B1 or 3-wing setup, and then we will take first come first serve to mark the structure. That's right. Right, S2B2 is very rare in the current stages, so we work only on S2B1 and 3-wing in this quarter. ठीक है. Guys, any doubts? Please पूछो, don't hesitate. Doubts पूछोगे तभी सीखोगे, जब सीखोगे तभी एग्जीक्यूट कर पाओगे. Am I clear? Liquidity calibration point generate हो रही है. Chapter 12, follow it. सर आपकी कुछ वीडियोस यूट्यूब पर प्ले नहीं होती, मेंबर्स ओनली है, उसका कुछ बता दे सर. गुड मॉर्निंग अजय. एक्सक्यूज मी.
सर आपकी कुछ वीडियोस है, आपकी कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे प्ले नहीं होती, मेंबर्स ओनली है, से कुछ बता दीजिए। वो महीने में एक वीडियोस अपडेट करता है यूट्यूब मेंबर्स के लिए, so that will help out in understanding a betterment of the structures. उसमें भी तीन कैटेगरी है। इफ यू टेक अल्टीमेट लेजेंड्स, उसमें आपको सेमिनार्स भी मिलेंगे दो तीन। सर 11 सितंबर 5 AM एंड 8 AM तक का जोन एक्सप्लेन कर दे। यूटीसी में है उसमें टाइमलाइन। किस टाइमलाइन पे है? ये तो उस्मान ग्रुप में भी आया था ना 11 सितंबर का लेवल्स, तो कंफ्यूजन कहाँ पे है आपको? ओके, आप लोग बताओ कौन सा, तो एक चार्ट उसमें ही करेंगे। ठीक है। एथेरियम। ओके, सो एथेरियम कहा गया। ओके, राइट। इन दिस फॉर्मेशन एवरीथिंग स्टेज सेम। ओके, कुछ चेंज नहीं करोगे। क्या चेंज करोगे? सिर्फ एनालिसिस ऑफ स्क्रीनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 hour। What is 1 hour indication currently saying? What is the first main thing that we need? We need to understand, do we have a Trishul formation? Yes, we do have a Trishul formation in 1 hour, right? So what is the first step that we have to follow? Trishul formation hone ke baad, first actual point is this, correct? So with this plan of action, we have a retracement point. Retracement point is always taken under the consideration of conversions. So where is the conversion point? First come, first serve ka. This is the supply which will get converted into demand, right? What do we notice? Exact rejection from 100%. Post completion of that, what is the first step of action plan which needs to be taken under the consideration? The mapping. With the mapping, we see M2 formation, which is minimality M2. With M2 formation, what do? We map out 200% range. Same way, let's come down to 15 minutes. 1 hour, we have a proper indication. With the proper indication of M2, what do we notice? We notice a movement structure which is built on a movement action plan with the setup, right? So where are the setup formation? The first setup formation was over here. Second setup formation was over here with an intact. With this formation, what are the major action plans which will be taken under the consideration? Execution points. Execution points through the previous action plan to the current mapping. So this is the demand which will take play from this range. Break and continue of 100%. What do we notice? We notice a 200% rejection zone. Once this 200% rejection zone is created and a rejection is taken place, because 150% से already हमारे पास एक rejection था, so what we'll do, this will act as our first come first serve supply. Okay, with this first come first serve supply, the action plan will be taken under the consideration of the wick because we already have a change of structure. So play one, break and continue.
When there is a break and continue, what do we do? 150%, 200%. Do we have a mapping? 150% का भी rejection है, 200% का भी rejection है. When there is a 200% rejection break and continue, what is the steps that we follow? 150% से rejection play out है. So we map the nearest surplus point. So this is the nearest surplus point which will take as an action surplus creation into a rejection point. So this will be our TP1 break and continue. Minimality M1 है, minimality M1 है तो 150% का action play out होगा जो कि हमारा 1 hour का target के साथ match करता है, right? The structure is same, execution points remains the same, right? So what are the major things that you have to follow? Just make sure wait for a setup to execute. Running trades में execute मत देखना. ठीक है अनुराग? Am I clear? So since the gold price has gone up so much, I think the square root method will not work even in Q1 and Q2. You can check in Q1 and Q2 because we have executed the trades. Okay, Anurag, am I clear? And it always works, Arvind. नहीं Agastya, direction is still the same. No changes. Okay, you can do it. Right? Q1 में जाके gold का testing कर लो. It works perfectly. And square root formula is only for gold. सर कभी कभी मार्केट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी काफी ऊपर चला जाता है लेकिन हम रिवर्सल प्लान कर लेते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं. आप रिवर्सल प्लान कर ही क्यों रहे हो? जब तक सेटअप क्रिएट नहीं होता है तब तक रिवर्सल प्लान हम देखते ही नहीं है एट फर्स्ट प्लेस, right? With that execution, the proportionate action plan is taken under the consideration through the mapping of the previous surplus movements. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ हमेशा आपको सप्लाई एंड डिमांड को अलोकेट करके चलना होता है.
तभी आप रिवर्सल प्लान ऑफ एक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो बिना सप्लाई एंड डिमांड एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स विद द सेटअप फॉर्मेशन जब तक नहीं होता है तब तक सेम डायरेक्शन में ही ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देखना होता है. Okay, Ramesh. In Indian markets, there are a lot of gap up and gap downs. Do we need to consider any special conditions while structure mapping? You have to look in perspective of mapping the mathematical concept 2.0, which is TTS 2.0, and then allocate the supply and demand structure. Next session में उसके ऊपर बात करेंगे अनुराग, ठीक है? Sir, it definitely works. What I said was since price went up so much, the square root result is nowhere near the current price target. That's what Arvind, right? You're trying the square root formula in a very wrong quarter, right? So 2026 का Q1 and Q2 में आपको फिर से वो फॉर्मूला वर्क होते हुए दिखेगी. Any other doubts, guys? Stream will be there for next 10 minutes. Sorry, 8 minutes. नहीं अंबिका, direction is right. Be in the same path. Sir, one question, आपने current demand 245 AM से क्यों नहीं ली? 245 कौन सा टाइमलाइन में देख रहे हो उसमें?
BTC 245. Let me check. सी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही होता है ना उसमें, राइट? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमारे पास ये वाला है, करेक्ट? ये होने के बाद हमारे पास सेकंड सर्व में ये है। अगर मैं डायरेक्टली फर्स्ट सर्व में ये लूंगा, देन यू विल गेट इनटू द कंफ्यूजन रेंज, राइट? एग्जैक्टली 100% से डायरेक्टली मूवमेंट एक्शन प्लान दिख रहा है ना यहाँ पे, right? That was a rejection point. If you notice, if I remove this 200% का candle, 100% से rejection लिया, correct? If I could have taken a direct 245 movement and applied from this range, M2 generate हो गया होता, M2 generate हुआ होता, then you could have come into a conclusion that market will directly give a movement till 200%. Definitely वो देगा. क्यों देगा? क्योंकि हमारा जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यूड मूवमेंट जनरेट होगी, ये प्लान ऑफ एक्शन यहाँ से प्लेस होगा, right? At this point of action, what you will be having, you will be having a right rejection point, right? अगर मैं यहाँ से लूंगा डायरेक्ट and allocate this structure, what will happen? The structure will not work as I required at an exact rejection point, right? तो उसके लिए हमेशा एक रिजेक्शन होने के बाद सेकेंड सर्विस में अलॉट होना होता है उसे, फर्स्ट सर्विस में नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो भी पहला दिखता है उसे ही मैप करना होगा। ओके,
There is nothing, or there is no count as how many candles you need for a minimality. You can be in the direct action plan if there is in a single candle rejection or a three candle rejection, that will be taken under the consideration of a minimality till the target announcement point. सर लिक्विडिटी कैलिब्रेशन जोन यूजुअली फॉर्म होता है बट कभी कभी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. इज देयर एनी वे जिससे थ्रू जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सेम चैप्टर फॉलो कर लो बुक के थ्रू, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट इजीली. ठीक है. सर द अनब्रेकेबल एंड क्रिप्टो वर्ल्ड, इन दोनों बुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए. आरजे आपका पूरा नाम क्या है? राधे श्याम. नाइस नेम मैन.
सर ओके बताता हूँ राधेश्याम सर एनी ओपिनियंस ऑन फेड रेट कट्स ऑन 17th हम we don't believe in that, we believe in only one thing. Is it following our setups? Is the volume developed in the same range of motion? Then we look for an execution, right? एक single candle के लिए I don't want to lose my entire perspective of my analysis, right? So always wait for the right proportion, sorry, always wait for the right proportionate angle to execute the trades. Let it be in a news time, let it be a non-news time, let it be a market in a consolidation zone, let it be a market in a POI range. Okay, Arvind? And Radhesham ji, आपका Unbreakable book में it's about motivation, how to create discipline, being consistent, and how you can change your spectrum of the life through the execution proportionate of continuous efforts with lesser hard work and more smarter work. Unbreakable में उसके बारे में है. Crypto world में it's in detail how the cryptos work, in what proportionate of the blockchain and किस proportionate में directional movement allocate होगा उस हिसाब से उसमें लिखा गया है. एंड उसमें एग्जैक्ट टारगेट बताया था, उसी टारगेट से रिजेक्शन लेके मार्केट अभी 16 में है, 1.16 में बीटीसी का. ठीक है. ओके राधेश्याम जी. सॉरी सर, बैटरी लो. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर नवाब. स्ट्रीम विल बी क्लोजिंग इन 5 minutes. जो भी लास्ट डाउट्स है प्लीज डू आस्क. And all the new members, remember one thing: whichever strategy, concept, or setups you follow to execute the trades, make sure you backtest for 6 months, forward test it for 6 months, then do a live analysis for 1 or 2 months. Then come with a small capital, execute the trades, compound the funds, protect the capital by risk to reward and risk management. Remove the FOMO and greed from your mind because it's a hard earned money what you use as your capital. And make sure to follow the setups and execute the trades in the directions of man.
दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।